This magazine is launched by our beautiful Bollywood diva Miniisha Lamba. Thank you so much everyone for being here. Thank you, thank you, thank you. और मैं congratulations कहना चाहूँगी to the entire team. जब उन्होंने concept मुझे explain किया था, I was like wow, we haven't had something that is done for newcomers. क्योंकि देखिए जब actor आते हैं film industry में, तो वो कैसे दिखाएं कि हम act कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं. आजकल तो बहुत ऑडिशंस लिए जाते हैं, लेकिन पहले ऑडिशंस लिए भी नहीं जा सकते थे. तो जब तक आपको चांस नहीं मिलता, आप प्रूव कैसे करेंगे स्क्रीन पे कि आप लोकप्रिय हो कि नहीं, कि आप हिट बनोगे कि नहीं, कि आगे आपका करियर होगा कि नहीं. तो और जब आप आते हो, शायद आपके पास कॉन्टैक्ट्स नहीं है कि आप किससे मिले, फोटोग्राफ्स किसको दें, क्योंकि हमारे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स इतने बिजी होते हैं, वो चाहते भी हैं, अगर वो चाहे भी वो हर न्यू कमर से नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि वो अपने काम में इतने बिजी होते हैं. सो दिस मैगजीन, और ये जो इन्होंने कहा था, ये मैगजीन ये फ्री में बेचने वाले हैं, फ्री में एक्चुअली भेजने वाले हैं, सॉरी नॉट बेचने, फ्री में भेजने वाले हैं पूरी इंडस्ट्री को, प्रोडक्शन हाउसेस को, प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स को, कोऑर्डिनेटर्स को, कास्टिंग एजेंट्स को, ताकि लोग इत्मीनान से देख सके, okay, this is the person, that is the person, that is the person. And I wish someone had done this earlier, because it is a novel concept. और 4 महीने के लिए ये फ्री के लिए बटेगा फॉर द फिल्म इंडस्ट्री, और मुझे लगता है ये फ्री में बटना चाहिए फॉर द फिल्म इंडस्ट्री. और उसके बाद दिस मैगजीन विल बी ऑन सेल ऑन स्टैंड्स फॉर द जनरल पब्लिक. सो आई थिंक इट इज वेरी अमेजिंग. आई विश समथिंग लाइक दिस, a platform like this was available when I was being launched and when I needed people to see me and all of that. So at least now newcomers will have a good exposure to people from the industry. That's what's important. ये तकदीर की बात है, किस्मत की बात है, फिल्म की किस्मत की बात है, आपकी किस्मत की बात है. लेकिन through all the ups and downs, what I would like to advise is keep your self belief, because that, see, जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है then everything is hunky dory. लेकिन जब वक्त होता है, जब चीजें ठीक नहीं चल रही है, आपका लो फेज हो रहा है, that is when you need to keep your self belief through the dark days, and that's the only thing I can advise. Miniisha, Jyoti Venkatesh here. Hi, how are you? It's been so long. Acha, after you made your debut in the film industry, within a very short time the digital era started. So what difference do you find from that era and the digital era today? Do you think more people are getting an opportunity to face the camera? See, the thing is that the digital era actually started much later. By the time the digital era started, if you see magazines, they were moving into the digital space, but people were not accessing it that much. The digital space really blew up when we started getting very high quality smartphones. You know, so that is when on the go people would read the news when you're in the car, when you're traveling, in your lunch break, when you have free time. So as you see, print media was there, but simultaneously they also started maintaining and acquiring a digital platform. But until you did see, and at that time an iPhone was someone only very people who could afford to pay that much would have it. It's only until brands like Oppo and Micromax and all these other brands came in, which priced their phones at a price where everyone can have a smartphone. When Reliance came in and said, you know what, we're going to give free data to everybody. You know, they had data plans that were
so cheap. That is when the internet became accessible to everybody. So that's when the boom happened, which I feel was phased, and the boom has happened now in the past 2, 3, I feel, years. All this while it was a transition. Thank you, Miniisha. And this question is for editor. You know, what is the print order you have? Bacha, like, you know, so he'll say Etoiles. So just for learning this, then some, I think I said, मैम तो उन्होंने कहा नहीं ये बहुत अच्छा तरीका है, but anyway we are working on this thing Etoiles today because टंग अलग है वहाँ पर लोग नहीं बोल पाएंगे तो इसको Etoiles today बोलेंगे. So आप जिसको Etoiles बोलना है तो बोलेंगे because इंडिया में तो कई प्रोनाउंसिएशन यानी स्टेट वाइज भी बदल जाते हैं सारे. So अभी हम इतना कर सकते हैं कि हम इसको हिंदी में नीचे लिखेंगे so that कि वो सही प्रोनाउंस हो जाए. So at least this will be an excuse now for the whole country to learn one new French word. To see you after so long, Miniisha. Thank you. Tell us your experience. What was your first reaction the moment he asked you to be on board for this? So मुझे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये बहुत कम होता है जहाँ पे नए लोग को अपॉर्चुनिटी मिलती है एंड नॉट ओनली अपॉर्चुनिटी हर कोई अपना जैसे इन्होंने बोला पोर्टफोलियो खींचता है अपने पोर्टफोलियो पे इन्वेस्ट करता है लेकिन उसके बाद टू गेट एक्सपोजर टू द राइट पीपल ताकि आपके पिक्चर्स इंडस्ट्री में सब लोग देखें पीपल डोंट हैव एक्सेस अगर आप छोटे शहर से आते हो अगर आप लेट्स से नवी मुंबई से भी आते हो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू नो कि मैं इन डायरेक्टर से कैसे मिलूँ इन प्रोड्यूसर के साथ कैसे मिलूँ आपको फिर कोई एक मैनेजर चाहिए जो आपका काम संभालेगा लेकिन मैनेजर्स को भी कैसे पता कि वो हर किसी के काम थोड़ी ना संभाल सकते हैं तो हाउ डू यू गेट द राइट पीपल टू मेक यू मीट द राइट पीपल एंड दिस मैगज़ीन इज़ वन वे जो बस हर प्रोड्यूसर डायरेक्टर कास्टिंग एजेंट के ऑफिस में पहुंच जाता है एंड आप कभी ना कभी तो वो मैगज़ीन देखोगे ही क्योंकि आपके ऑफिस में पड़ेगा सो दिस इज़ अ ग्रेट कॉन्सेप्ट एंड अ ग्रेट वे एंड जैसे मैंने सुना है इनका बिजनेस मॉडल क्योंकि मैं भी ये वंडर कर रही थी व्हेन आई वाज सीइंग द मैगज़ीन कि हाउ आर दे गोइंग टू मोनेटाइज ऑन इट बट सर इज़ अ वेरी स्मार्ट बिजनेसमैन so they have figured out exactly how to monetize on this but of course this is a long-term prospect. This is a prospect where you will see the fruition of it in a couple of years' time. उससे पहले तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही है, which is a very brave thing to do in any business. आपके जहन में हमेशा मनीषा जी की कवर के लिए तो शी इज ऑलरेडी टू कवर सो मेनी टाइम्स बहुत आपके जहन में हमेशा से बिल्कुल हमने बहुत अप्रोच करने की कोशिश की उनका टाइमिंग और ये सब हमें मैच नहीं कर पा रहा था तो फिर कल का फंक्शन डिसाइड हुआ दैन अनफॉर्चुनेटली ये न्यूज़ आया तो हमने कल पोस्टपोन किया फिर हमने रिक्वेस्ट किया क्योंकि उनका दिल्ली में शो था कहीं तो उन्होंने फिर वहाँ कैंसिल किया कि नहीं तो दिल्ली का देखेंगे बट आप कल का मैनेज करो दैन तो जैसा हमने सोचा था उससे ज़्यादा अच्छा कॉपरेशन मिला हमको एंड शी सपोर्टेड अस अरे दे दो ना फायदा क्या हुआ फिर मैम योर मैम यू सो लॉन्ग हाँ जी बोलिए मैम काफी वक्त से आप इंडस्ट्री में हैं तो एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म के बारे में कुछ जानना चाहूँगा कि जब से आप आई हैं तो ऐसा मेमोरेबल एक्सपीरियंस बताइए किसी जर्नलिस्ट के साथ जब इंटरव्यू किया हो आपने या ऐसा नॉट सो मेमोरेबल एक्सपीरियंस वो बताइए क्या कहना चाहेंगे देखिए मुझे नॉट सो मेमोरेबल एक्सपीरियंस इतने ज़्यादा मतलब मुझे हुए ही नहीं है आई थिंक और मेमोरेबल एक्सपीरियंसेस बहुत हुए हैं बिकॉज आई फील वेरी लकी जर्नलिस्ट्स हैव बीन काइंड टू मी they have been more kind to me than otherwise. So I have great respect for our entertainment journalists. I've had a great relationship with them over the years. Miniisha, you would be the face of this magazine, or how would you be associated? Like, you know, whenever they need you, in what kind of an So whenever they need me, of course, I am here for them. Today was a launch event and they had gotten in touch with me and said, you know, this is the concept of it. Does it work for you? Do you like it? And I said, great, I'm on board. I'll come launch your magazine for you and wish you all the best.
Sir, I have a question for you. How did you came up with this thought? मतलब इतना creative और इतना sufficient thought है तो कैसे आया दिमाग में? एक्चुअली मैंने तो अभी पहले ही बताया, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो एन आर्टिस्ट, सो बेसिकली सिंगर, क्लासिकल सिंगर। तो बहुत से जगहों पर हम जाते थे। हमारे टाइम में तो इतना, मतलब 20 साल पहले ऐसा नहीं था, डिजिटल प्लेटफॉर्म तो अब आया है। तो बहुत देखा कि टैलेंट होने के बाद भी कई बार प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, कुछ अप्रोचेज होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें। तो फिर हमने ये डिसाइड किया, बहुत साल, 15 साल पहले का ये कॉन्सेप्ट है, अभी का नहीं है। सो बाय 15 years आई एम कंटिन्यूसली लुकिंग दैट देयर इज़ नो दिस काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म इज़ नॉट अवेलेबल। इवन आप गूगल भी करके देखेंगे, बट ऐसा प्लेटफॉर्म कहीं पे मैगजीन के लिए या नहीं है, नए आर्टिस्ट के लिए। अभी तो हम इसके लिए कर रहे हैं, आगे आके फैशन डिज़ाइनिंग में भी जा रहे हैं। इसके आगे जो एडिशंस आएंगे उसमें फैशन डिज़ाइनिंग है एंड ऑल। सो आइडिया आया बेसिकली हमें खुद के अपने एक्सपीरियंस से, कि जब नहीं मिलता कुछ प्लेटफॉर्म तो जो टीस उठती है वो बहुत बड़ा एज आर्टिस्ट। बट हमारे अंदर शायद कहीं एक कलाकार से ज़्यादा एक मैनेजमेंट का पर्सन है, बिजनेस का पर्सन है। देन आई मोल्ड माई सेल्फ इनटू बिजनेस एंड आई रिसर्च्ड इट एंड नाउ दिस रिजल्ट इन फ्रंट ऑफ यू। Sir, this magazine में कितनी categories होंगी? जैसे finance हो गया, फिर सब हो गया। नहीं, इसमें ऐसा कैटेगरी नहीं, ये प्योरली एक इंट्रो मैगजीन है, जिसमें जितने भी न्यू फेसेस हैं, जिनको कभी जैसे मिनीशा ने बताया कि इतने सारे लोगों को, प्रोड्यूसर को कैसे अप्रोच करें, सेलिब्रिटीज़ के सामने जाना आसान नहीं है, इतनी सिक्योरिटीज़ हैं एंड एवरीथिंग। ठीक है, ऑनलाइन हम सर्च कर लेते हैं, बट अंदर उनके ऑफिस तक जाना इट्स नॉट पॉसिबल। सो हम लोग एक कंपनी है बेसिकली जो एक तरह से उनको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। एनी बॉडी फ्रॉम कॉमन मैन अगर वो भी हमको अप्रोच करेगा, सो हमारी टीम जो है कनेक्ट करेगी उसके टैलेंट के साथ एंड कनेक्ट कर देगी डायरेक्ट प्रोड्यूसर एक्टर्स के साथ कि यस आप देखिए अगर इनको कुछ चांस दे सकते। सो ये है सो इट इज़ प्योरली एन इंट्रोडक्शन मैगजीन। इसमें कोई ऐसा आर्टिकल कुछ नहीं होगा, ओनली 3 pages विल बी देयर फॉर दिस न्यूज़ ऑफ फिल्म न्यूज़ एंड सम पॉलिटिकल न्यूज़। ओनली 3 pages आर देयर, अदर ऑल pages आर कनेक्टेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द अपकमिंग आर्टिस्ट। Mini, you were there in Big Boss. Now Kangana का show भी है लॉकअप करके। I'm asking you. I don't know about the show. कभी ऐसे कि ऑफर आए तो would you be interested? Reality Big Boss show में आपने कोई and reality show anything? में या OTT anything? नहीं नहीं, 1 second, वो शो होस्ट कर रही है कि वो? Host कर रही है. She's hosting the show. अच्छा, she's not a contestant of the She's show. not connected. She's hosting Okay, the show. okay. Just like maybe like a Big Boss you could say. This is on what platform or channel? It's on Alt Balaji and और बालाजी पर ये आने वाला है, कंगना रनावत जी होस्ट कर रही हैं। and Balaji का हाँ, I heard about this show. MX Player, MX yeah. Player. Okay, but all Balaji is doing it, right? Alt is doing. It's called Okay. Lockup. Okay. तो वो One sec. Excuse me, ma'am. Ma'am, can I just see your tattoo? Yeah, sure. Sure. ओह वाह, बताइए मैडम। Where did you get this from? It's from my friend. In India only? Yeah. It's a burning rose. Yeah, that I know. Very nicely done. Nice work. Thank you. Yeah. Really not one. It's a good thing because she was there in Big she's Boss. हाँ. What a work legend. अगर ऐसा कोई आपको अगर कोई ऑफर आए लॉकअप में जाने के लिए, एनीवन रियलिटी शो या Because they're looking I think if the offer comes and the deal works out in 2-3 checkpoints that it would probably need to work out, and then why not? what are these checkpoints? Like it is check also. Yeah. check is must actually. वो तो सबके लिए होता है, आपके लिए भी होता है ना? आपके लिए भी होता है जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, when someone approaches you for a new job, आप पहले ये बोलते हो ना, एक चेकलिस्ट है, लेकिन चेकलिस्ट में सबसे पहले चेक भी है। So beside that, like वो तो checkpoint हो गया, उसके अलावा what? See, I think the very first thing to ask is what is the concept. If I will enjoy doing it, if I think that I would be able to compete well doing it, then that is the first criteria. And then after that, of course, is monetaries and what it should always be your time. Your time and monetaries for it should be a match. क्योंकि एक आखिरी सवाल है, क्योंकि टैटू आपको बहुत पसंद है, so जी। हम देखेंगे इन फ्यूचर आपको लाइक ऐसे कुछ डिफरेंट मेरे पास है, I have 1-2 tattoos, लेकिन वो छोटे हैं. You already have a heart on your hand. Yeah. Because छोटू सा. So notice. there are lots of openings on now OTT actually. Yeah. Sure, what things are other besides this magazine? और क्या हो रहा है? What do you like? So there is a show of mine releasing which all Balaji has produced. It's going to release on MX and it is called Cold, Messy, Lonely.
So it's a relationship about modern love, and it's a relationship how love and today in the modern world can be really messy and complicated and this and that. So this just gives a very real take on that. It's funny. I would call it a comedy plus drama. So that's called a dramedy. Yeah, I think that's called a dramedy. So it's a dramedy showing different kinds of love, and there are many kind of people with different kinds of relationships. It's not one kind of relationship. It's different relationships and how there are different people who So it's going to be a fun, light show. One last question from my side. हाँ. हमने लता जी को आज श्रद्धांजलि दी. हाँ जी, हाँ जी. देहांत हो गया. How would you pay your tribute to her? Like, in case if any memories you have with her, yeah, how do you remember? So unfortunately, I have never met Lata ji, never, and but I have always enjoyed ma'am's music, and आज ही मैं उनके गाने सुन रही थी. आज मैं सुन रही थी, मैं गा रही थी, मैं गुनगुना रही थी, just in remembrance. So that is the biggest tribute you can give, is by never forgetting. Because with an artist, you will never forget. Their music is. मैं दिलवाले दुल्हनिया की गाना सुन रही थी. Even today it's so beautiful. लग नहीं रहा था कि इतने साल पहले, और मुझे फिर लिरिक्स याद आ गए थे और मैं गा रही थी, एंड देन फिर मुझे वो याद आया था कि when I saw the film, what I felt. So that will never change with an artist. Lata ji and actors, who've gone in the yesteryears will always be with us. Thank you, man. Wish you all the best. Thank you. Thank you very much. Thank you all of you. Thank you. Thank you. Thank you all camera people, all press people. Thank you guys. Please join for cocktails and dinner. Please join. Cocktails and dinner, nice. चलो हम चलते हैं. या. क्या cocktail dinner के लिए? नहीं.